Okay, welcome to the webinar. And our today's topic is Business Incubation Center, Challenges and Opportunities. We have with us Dr. Akil from NUST and Business Schools. And we have another guest, we have Engineer Rizwan from Bahrain University. He's looking after Incubation Center, and he's also an assistant professor over there. We have Dr. Iram Sheikh. She's basically she belongs to Sindh University Jamshoro, and we have got another guest, Miss Mavish Jabin. She's an assistant professor, and she's also pursuing her PhD in entrepreneurship. So before I move on with my speakers, I would like to share some of the information as this is our format. To begin with, I would like to share some of the information that I've gathered for this webinar. According to one of the survey, there are around 15 incubation center which is in Pakistan which is operating, and out of 15, 8 belongs to the university, and 4 belongs to the industry, and 3 belongs to the technology. And out of these 8 business incubation center setups of there are around 2 mainly main contributions are coming in the area of NUST. They are also making a very important contribution, and also DAO. DAO is also making a very important contribution in the incubation center. If I would like to give you some of the leading business incubation center, so we have count on fingers. So I would like to share their names and their contributions. One of the very important major contribution is um, Plan 9. They are basically based in Lahore. Their contribution is about 60 setups they have made in the contributions. Microsoft Innovations, around they have got 35 setups they have done. And incubation center, technology incubation center, especially the NUST. We have Dr. Akil, he's from NUST, and their contribution in this particular area is 11 successful companies they have developed, and 25 setups are there on account of NUST. Pasha is also Pasha Fund is also making contribution around 12 setups, and Shmeda is also making. They have done 28 successful project, and they are also with the expenditure of 4.2 billion. So this is the information that I've gathered for just to begin this seminar. I would like to start with Dr. Akil. Dr. Akil, Professor, can you please elaborate that how we can encourage students and the faculty to create new enterprise or businesses? Can you give us some tips and techniques that how can we just encourage this thing in our faculty and our students as well? Ji, Dr. Akil. Thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. Faisab, just a slight clarification. I am currently not working with NUST Okay. Business School. I resigned from there, and currently I'm Okay. working on my own venture. Okay. But incubation centers, I've been working within this sector, teaching entrepreneurship, mentoring startups for over a decade now. So, Alhamdulillah, there is a wealth of experience that I've seen my students and their companies go through different areas, and some succeeding, some partially, and some not succeeding at all. Um, Coming to your main question, what you're highlighting, how we can actually motivate students and faculty towards entrepreneurship. I'll take the students first. There is literally nothing bigger to motivate them than to tell them what the reality is. Many a times we, as faculty members as well, we try to cover and shelter the students as much as we can without giving them the true knowledge. So the faculty members, it pretty much becomes the responsibility to tell them the truth about the industry. If we look at the unemployment figures, the graduate unemployment figures, that alone is a telling sign that there are very few jobs out there, and the number of graduates coming out
What are the options that a bachelor student and undergraduate student has? Once you do your bachelor's, you don't find a job, go for a master's. You don't find a job after that, you go for a PhD. And preferably, you go for a PhD in a foreign country and settle over there. And this is the employee mindset that we have been building through our education, through our teaching. So if you look at management sciences, if you look at marketing, even the best universities out there, the ones which are teaching case studies and highlighting this case study teaching methodology, every area, caselets and case studies, what is being highlighted is that you are the marketing manager of a big foreign Fortune 500 company. The employee mindset is being instilled throughout the education. So when we talk about the entrepreneurial mindset, what needs to be done is that we have to uh, literally change the entire curricula. We have to change the entire teaching style. So from entrepreneurial intention, entrepreneurial orientation, entrepreneurial learning, entrepreneurial anything, now the concept is moving towards entrepreneurial teaching. The teachers need to be taught how to teach. That includes myself as well. And once that happens, the entrepreneurial teaching is going to foster more and more businesses. And if you look at the different areas in the world where there have been successes, it boils down to what the teacher knows and what the teacher does. So Okay. the responsibility, again, the teaching methodology, the ways that are being adopted, and the focus that is being taken on. Okay, I see. Okay, right. Uh, Rizwan sir, can you please tell us something that how can we foster an entrepreneurial spirit at university? Because since you are very efficiently, you are working at Bahia University and you are running a very good business incubation center operation. So how can you define this thing that one should go for this type of steps, that this is how we can say, okay, this is how we can fostering an entrepreneurial spirit at university. Okay, the first of all, I would like to thank you very much that just bringing a chance to talk here in this forum with the different universities representative and you as well. Thank you very much for the Indus University for creating such kinds of events and awareness sessions for the outsiders and those people who just need to know what exactly the entrepreneurship is. It's the fostering entrepreneur. The first of all, you need to understand what is an entrepreneur. ये हमारे इस वक्त देख सकते हैं फेस मास्क जो हमने लगाए हुए हैं. Entrepreneur means अगर आप उसको गूगल पर देख लें, it's कारोबारी. Means the fostering in entrepreneurship is that you need to do something to take your own initiative rather in a form of innovation. Okay, this could be one thing. Innovation की जब हम बात करते हैं और fostering की, तो उसके लिए first thing is that your mindset. ठीक है, तो सबसे पहले माइंडसेट का होना ज़रूरी है. अवेयरनेस कि क्या है ये कारोबार, क्यों है ये कारोबार, कैसे चलेगा ये कारोबार. These are the three important key elements that based on the fostering entrepreneurship कि इनको देखते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे then you get to know कैसे आगे बढ़ा जाए कि इन द करंट सिचुएशन जो फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्या है, क्यों है जरूरत लोगों को बताने की. एज यू कैन सी द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पाकिस्तान, see the China, see the Turkey, and all other countries, they have turned the nation upside down by using an entrepreneurial skills. एक छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाई चाइना ने. आज हम जो भी देखते हैं कुछ भी हो सकता है, ये कपड़ा भी अभी चाइना से बन के आ रहा हो, चाहिए आईफोन ले लें, whatever it is. So they have made and they have changed their nation, change कर दिया. So this is the need of the era, or that's why the HSC, the Higher Education Commission, has implemented in the university mandatory that you do have an entrepreneurship centers. And in the centers, the first thing you need to create the awareness, the mindset. क्योंकि ये जो entrepreneurship है एक जहनी कैफियत का नाम है. ठीक है जी, एक कैफियत का नाम है. And after having that situation, then you need to work on that. Just in so many policies implementations. As you can see, a few months back there was a policy called PPL, practical learning lab for the undergraduate. ये पॉलिसी ठीक है जी, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, जिसपे उन्होंने प्रैक्टिकल लर्निंग लैब का एक नाम दिया है. इन 4 hours up to your 8 semesters, in 4 semesters के अंदर then you have to do
the practical life means the implementation in entrepreneurship. Otherwise, they will not give you. ठीक है जी, PEC, Pakistan Engineering Council is also working on that, but in days to come it will implement it. But the BICs has established in the universities, as you have said. तो इसके ऊपर काम हो रहा है। तो फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे ज़रूरत है अवेयरनेस। जैसे अभी हम एक काम कर रहे हैं, क्या है ये, क्यों इस वक्त पाकिस्तान में देयर आर सो मेनी इंक्यूबेशन सेंटर्स, आपके कोवर्किंग स्पेस, आपके पास इनोवेशन सेंटर। जैसे बहरिया में हमारे पास 8 मंजिला पूरा एक इनोवेशन सेंटर है। कराची के अंदर एनआईसीज हैं। हम पीआईटीबी की बात करें, अभी इन्होंने 13 शहरों के अंदर जो है इन्होंने अपने पीआईटीबीज ने अपने सेशंस खोलने हैं। ठीक है, डॉ में इनकी बातचीत चल रही है, हो सकता है कराची में पीआईटीबी डॉ के अंदर खुले वगैरह। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस ऑन द वे। तो इस Okay. वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरियत है वो ये है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि इसकी ज़रूरत क्या है। बच्चों को बताना कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरत क्या है, कि आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। क्योंकि देखें, जॉब्स नहीं है। जितने लोग यूनिवर्सिटीज़ में माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी पढ़ के गुजरे हैं, इंडस्ट्री को जो देख रहे हैं कि आफ्टर हैविंग योर 4 years of graduation, after you doing the master's, PhD, whatever it is, you have to be like this or this. Either you should be a provider rather than a seeker. What you want to be in after the 4 years, it's you that you have to create the opportunities. So ये इस Okay. वक्त ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की फॉस्टरिंग के लिए, कि किस तरह से इसको लेके चलना है, जिसके 3 हमने एलिमेंट बता दिए, क्यों, कैसा है ये कारोबार है, क्यों है और किस तरह से। थैंक यू, Right. आई होप आंसर योर क्वेश्चन। Right. थैंक यू। I would like to clarify, Rizwan, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप बताएंगे what measures universities are taking to just fostering this entrepreneurial mindset. What major activities are being taking place at university levels? Just specific that, yeah, as you said that. Okay, there are the four major activities. Yes. Yes, they are the yes. The four major activities. Normally, every university, even alums, IBA, Beria, I hope Indus, and Sydney University. Yeah, I'm sure everybody is taking the first. Its step is to create an incubation center or any innovation center or over a single room. And Okay. after that, you need to start a training, a first mindset training, and afterwards you need to give a proper training like Shell Tamir program, like WIRE program. There are so many programs is going on that you need to inculcate that program. And afterwards, the third thing, you need to create a business idea or innovation, whatever the ideas, competition amongst the student. For encouragement, you need to give some incentives because it's necessary, because the student will take a part in that. Or afterwards, the fourth thing is that you need to give the opportunity for the international events. तो ये जो चार मेजर एस्पेक्ट्स है जिसकी हमने बात की, कि इंक्यूबेशन बनाए, भले एक कमरा बनाए, कोई इशू नहीं है। नंबर टू, उस पर ट्रेनिंग्स कराएं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेनिंग्स कराएं। ट्रेनिंग्स आपकी माइंडसेट डेवलपमेंट की हो सकती हैं, क्योंकि आपके पास जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं या कमर्शलाइजेशन की, तो उसके 3 फेज होते हैं। एक होता है आइडिया फेज, एक होता है आइडिया फेज के बाद आप मिडिल फेज में होते हैं, और तीसरा होता है आपका ग्रोथ फेज। तो वो तीनों फेजेस के लिए आपकी ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आप लेट सपोज इफ़ यू आर डीलिंग विद इंजीनियरिंग, ठीक है, मैं बात थोड़ी लंबी कर रहा हूँ, तो उसमें आपके एस्पेक्ट्स चेंज हो जाएंगे। जो प्योर बिजनेस है वो अलग होगा, साइकोलॉजी वाला अलग होगा, तो ट्रेनिंग्स चेंज होगी। तो पहला कोई ना कोई कमरा बनाया जाए। यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी इनिशिएटिव ले चुकी है, नहीं है तो ये इनको करना ज़रूरी होगा। नंबर टू, ट्रेनिंग्स, जिसके लिए PLL का एक कॉन्सेप्ट आया है, प्रैक्टिकल लर्निंग लैब का। ट्रेनिंग्स करानी होंगी आप लोगों को। ट्रेनिंग्स कराने के बाद आप लोगों ने उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए बिजनेस आइडिया कंपटीशन, जो HSC की भी रिक्वायरमेंट है कि साल में आपने 2 बिजनेस आइडिया कंपटीशंस कराने हैं। ठीक, तो वो आपने इनके साथ कराने हैं। ठीक है, इंसेंटिव मिल जाए, स्पॉन्सर मिल जाए, कुछ भी हो व्हाट्सएवर, फिर उसको इंक्यूबेट करें। और चौथी और आखिरी उसके बाद जो एलिमेंट है, उनको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अगर वो इस काबिल हो जाए तो वो उनको प्रोवाइड करें। जो अभी इस वक्त बेतहाशा आ रही हैं इस वक्त, इस एट द मोमेंट, लाइक पिनिप की पाकिस्तान, जो पहला नेशनल इन्वेस्टर पोर्टल है जो खुल गया है, और 30 मार्च उसकी, या 31 मार्च लास्ट डेट है। इन दैट you will get 50 million PKR rupees in that, and they're only giving those startups who are associated with incubation centers in the Pakistan. Great. तो Lovely. incubation से associated
होगा वो ही Great, होगा. Right. So Right. these are the measures that we're taking, the four things which I've highlighted. And if great, you want lovely. to add something No, else, so you can just let us no, know. I Thank you. think you have convincingly given the answer of my questions. Thank you. I'm coming back to you again. इरम, डॉक्टर इरम, बताइएगा कि अभी डॉक्टर रिजवान भी बता रहे थे कि फाइनेंस के हवाले से काफ़ी जो है बड़े फंडिंग्स और उसकी बात हो रही होती है कि क्या व्हाट विल बी द शेयर 40-60 का शेयर वुड बी an ideal or 50-50 ka shares. How do you being as an finance specialist, because your PhD is in finance, so how would you recommend any particular method for managing managing this fund from the students perspective and from the incubation centers perspective? Ji, please, Dr. Iram. First of all, assalamu alaikum to everybody, and I would like to thank you, the Indus University, for giving me this opportunity to talk on the incubation and the finance related issues and the challenges which are facing all the SMEs and the incubations centers. So, Mr. Rizwan, and you were talking about the financing resources or the sources through which these incubations and the SMEs can get finance, and you were talking about the 50 and 40 40-60 ratio about the financing. So basically, what is the 60 and 40 ratio? First of all, I want to clear this is known as the capital structure. Okay, in capital structure we have two types of financing sources. Number one is the equity and the second is the debt financing. Okay, now I would like to tell you what is equity and what is debt financing. Equity is whatever you have in your own bank accounts, your at your home, at your pocket. ठीक है, आपके पास जो भी amount है, you can start with that amount जो कि आपके पास पड़ा होता है. लेकिन that amount is not enough to start any kind of a business. You need more finance. ठीक है, अब जो दूसरा फाइनेंस का तरीका होता है, this equity is the internal financing source. Okay, the second is the external you need. For external source of finance, you need other kind of intermediaries, banks, other resources through which you can get the huge amount. लेकिन उसके लिए क्या होता है, जिसको हम normally debt financing कहते हैं, या हम कहते हैं जो हम bonds issue करवाते हैं, loans लेते हैं, लेकिन उसके against you have to pay the interest. ठीक है, and interest is a obligation which you have to pay, जो कि बहुत burden समझा जाता है startup phase पे. अच्छा, इसके हवाले से मैं और बात करूंगी. उससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहती हूँ कि इंक्यूबेशन भी एक बिजनेस साइकिल से गुजरता है. जैसे बिजनेस साइकिल होती है, इसी तरीके से इंक्यूबेशन सेंटर्स हैज टू फेस द स्टेजेस थ्रू आउट. मींस दे हैव आल्सो अ लाइफ थ्रू व्हिच दे हैव टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ द फाइनेंस. सबसे पहले हमारे पास जो इनका फेज होता है उनको बोला जाता है सीड पीरियड, विच इज वेरी स्टार्ट. जो इंक्यूबेशन में ये स्टार्ट अभी कर रहे होते हैं और बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं फाइनेंस के लिए, तो जो पहले मैंने बताया कि दे हैव ओनली द इक्विटी फाइनेंसिंग, उसके थ्रू इनको करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है? बिकॉज देयर यील्ड इज वेरी स्मॉल, लेस यील्ड होता है, रिटर्न इनका अभी होता ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता, एंड रिस्क इज वेरी हाई. That's why no any intermediary or a bank are willing to give them finance. तो इनके पास ऑप्शन ही नहीं रहता है कि हम किसी और एक्सटर्नल सोर्स की तरफ जाएं. ठीक है, तो उस कंडीशन में ये स्टार्ट करते हैं अपने इक्विटी के साथ. अच्छा, इस इक्विटी के अलावा इनके पास एक और चांस होता है जिसके थ्रू ये फाइनेंस अक्वायर कर सकते हैं, दैट इज द वेंचर कैपिटल. ठीक है, वेंचर कैपिटल के बारे में आपने सुना होगा कि क्या होता है. इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ अ प्राइवेट इक्विटी and a form of financing which the different kind of investors give to the entrepreneurs or SME who are at a very initial stage. ठीक है, तो इसके थ्रू वो स्टार्ट ले रहे होते हैं. फिर आता है इनका सेकंड फेज या कहते हैं स्टेज, दैट इज इन्फेंट पीरियड. ऑफ कोर्स इट इज अब थोड़ा अभी ये स्टार्ट हुए हैं ग्रो की तरफ. ठीक है, अभी भी इनका जो यील्ड होता है वो स्लो होता है, लो होता है, रिस्क हाई होता है. Again, at that phase, they are not able to go for the external financing. ठीक है, अब इस फेज में they have equity, they have venture capital. एक और financing source है जिसके थ्रू ये finance generate कर सकते हैं, that is known as business angels. I would like to tell you what is business angels. अब वो क्या होते हैं? These are the individuals, wealthy individuals basically, जिनको हम angels कहते हैं. They are performed just like angels for the SMEs or entrepreneurs. ठीक है, ये उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे होते हैं.
ठीक है, फाइनेंस सपोर्ट दे रहे होते हैं। और उसके अलावा दीज आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट, अलोंग विद द फाइनेंस दे आर गिविंग देम द मैनेजमेंट सपोर्ट, कंसल्टिंग सपोर्ट, technical support, and give them different kind of information through which they can generate more and more finance and acquire the finance. अब ये रही इनकी दो स्टेजेस। अभी ये थोड़ा स्टेबल फॉर्म में हो जाते हैं या हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फाइनेंसिंग टेक्निक्स। थर्ड फेज आता है अब इनका मेच्योरिटी का, जो अभी ये ग्रोथ करने लगते हैं या ग्रो कर सकते हैं विद दीज काइंड ऑफ फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, उसके बाद अब इनकी यील्ड थोड़ी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, इनका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होना होता है, रिस्क जो है रिड्यूस होता जाता है अभी इस स्टेज में। तो अब इसमें जो फाइनेंस होगा इतना ये स्टेबल हो सकते हैं कि मार्केट में आ सकते हैं। दे कैन आस्क द फाइनेंस इन अ शेप ऑफ डेट फाइनेंसिंग, ठीक है, बैंक्स के थ्रू, इंटरमीडियरीज के थ्रू। अब ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि यस वी कैन एबल टू रिटर्न द इंटरेस्ट रेट इफ वी आर गेटिंग फाइनेंस। तो अब इनके पास समझे तीन तरीके हो गए, इक्विटी, वेंचर कैपिटल, बिजनेस एंजल्स। ठीक है, नाउ दे कैन अक्वायर द फाइनेंस, डेट फाइनेंसिंग, जो कि लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी होती है, उसकी तरफ ये आ जाएंगे। अच्छा, अब मेच्योर होना जब स्टार्ट हो जाते हैं, देयर इज द पीक एज वेल। दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। फोर्थ स्टेज पे अब ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ के रेट पे आ जाते हैं। सही है, ग्रोथ वाले फेज पे जब आ जाते हैं, देयर यील्ड इज वेरी हाई, their risk is very low. ठीक है, they are, you can say that they are in a very stable form, so they can do different kind of activities now to generate finance. अब चार पीछे जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ वो तो इनके पास है। अब ये खुल के मैदान में आ सकते हैं, दे कम टू द कैपिटल मार्केट। अब ये मार्केट में जब आते हैं, दे कैन इशू द आईपीओ। ठीक है, थ्रू आईपीओ दे कैन जनरेट द मोर फाइनेंस। नाउ व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ इज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या जिसको स्टॉक कहा जाता है। यू ओके, कम इनटू द, शेयर्स के बारे में, ठीक है, शेयर्स की जो आप बात करें, शेयर्स के लिए भी, हाँ राइट। तो ये शेयर्स जो होते हैं या स्टॉक, आप अब अपने कस्टमर्स को मार्केट में ओपनली जो है सेल आउट करना शुरू कर देते हैं, तो उसके थ्रू भी आपके पास बहुत ज्यादा जनरेट हो जाता है फाइनेंस। क्योंकि अब इतनी कंडीशन आपकी स्टेबल हो गई है कि अब आप आराम से सारी चीजों को डील कर सकते हैं। पीछे की जो डेट फाइनेंसिंग मैंने बताई, और इसके अलावा ये आईपीओ। ओके, राइट, क्योंकि जी राइट, राइट, नहीं, अच्छा आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, आई रियली अप्रिशिएट। अच्छा, आई वुड लाइक टू मूव टू महजबीन। महजबीन, आर यू विद अस? Right. Yes, राइट, Navish. अच्छा जी, महजबीन, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपके पास लेके आ रहा हूँ। हमें थोड़ा सा जरा ऑडियंस को बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेटर एंड द इंक्यूबेटर्स। बिकॉज यहाँ पे जो है वो अभी हमारे पास बड़ी पोटेंशियल है एक्सेलरेटर्स के पास भी, बट दे आर नॉट मोबिलाइज प्रॉपरली। लेकिन हम जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन incubation center. Do you think that पहले तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें what is the difference between incubator and the accelerators, and आप बताइए कि थोड़ा सा इनका क्या जो है वो रोल हो सकता है in the development of the economy of Pakistan, please. जी, मैं विश जबीन। Okay, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Thank you so much, Hafisa, for Right. inviting me and taking a lead from all the panelists, like as Engineer Rizwan said and Dr. Akhir and Dr. Iram shared, कि हमारे पास entrepreneurship is a word which is a buzzing word, और हर जगह हम entrepreneurship की भी बात कर रहे हैं, हम incubation centers की बात भी कर रहे हैं, हम accelerators की बात भी कर रहे हैं, but it is very important and essential कि हम अपनी यूथ को, जो हमारे पास 60% से ज़्यादा यूथ है, हम उस चीज़ को उनके लिए क्लियर करें और एक पाथ क्लियर करें what actually incubation centers are and what accelerators are, because ये दोनों terms interchangeably भी यूज होती हैं और ये थोड़ी सी confusing भी हैं। हम इंक्यूबेशन सेंटर्स की जब बात करते हैं तो नेशनल बिजनेस इंक्यूबेशन एसोसिएशन यूएसए इसको डिफाइन करती है कि बिजनेस इंक्यूबेटर्स एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं फॉर द इकोनॉमिक एंड रीजनल ग्रोथ के लिए। जब हम इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ऑरिक डिपार्टमेंट यानी रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स। अच्छा, बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या करते हैं और एक्सेलरेटर्स क्या करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है यूथ के लिए भी, हमारे लिए भी, और उन लोगों के लिए, उन सब फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं या फैकल्टी लेड स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स बेसिकली वो सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं, जिस सिमुलेशन में आपको सेक्रेटेरियल वर्क से लेके और जब तक वो आइडिया मैच्योर होता है, जब तक की स्पेस प्रोवाइड की जाती है, आपको क्लरिकल स्टाफ प्रोवाइड किया जाता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, आपको टेक्निकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं,
लेट्स सपोज अगर एक स्टार्टअप है जो एक आइडिया के साथ आया है और उस आइडिया को ऑब्वियसली एज अ सीड वो हमारे पास आया है और उसको हमें प्लांट में ग्रो करना है, एक ट्री में ग्रो करना है, तो ऑब्वियसली हम उसकी नर्चरिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वाटरिंग। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं उस आइडिया को इंक्यूबेशन में फॉर 3 to 5 years, और वहां से हम उसको हर तरह की मेंटोरिंग को, वर्किंग स्पेस, उसकी नर्चरिंग, उसके लिए गाइडेंस, उसको कोलैबोरेशंस प्रोवाइड करते हैं और हम उसको मेच्योर करते हैं। जिसमें वो मेच्योर हो जाता है ना, हम वहाँ पे फोकस करवाते हैं इनोवेशन पे, हम फोकस करवाते हैं बिजनेस प्लान पे, हम फोकस करवाते हैं आइडिया पे। लेकिन जब वो मेच्योर हो जाता है तो इट इज अ पॉलिसी ऑफ एजीसी ऑल्सो कि आप उसको अपने से अलग कर देते हैं। जिस तरह हम एक बेबी को जब वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है और हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो है वो कॉम्प्रीहेंड करना स्टार्ट कर देता है, तो जिस तरह बेबी को इंक्यूबेशन सेंटर से निकालते हैं, इंक्यूबेटर से निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम उस वेंचर को, उस स्टार्टअप को भी निकालते हैं। यहाँ से स्टेज शुरू होती है एक्सेलरेटर्स। एक्सेलरेटर्स आर लाइक फिनिशिंग स्कूल। जैसे हमारे पास I2I है, हमारे पास प्लान 9 है, हमारे पास नेस्ट IO है, हमारे पास टेलेनॉर वेलोसिटी है, इन्वेस्ट टू इनोवेट यही काम कर रहा है हमारे पास वी कैन नेम इट और हैव इट वाली बात है, हमारे पास बहुत सारे एक्सेलरेटर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। वो एक्सेलरेटर जो फिनिशिंग पे काम कर रहे हैं, वो एक्सेलरेटर जो 3 to 5 months रिग्रेस किस्म की ट्रेनिंग देते हैं और तो ट्रेनिंग के बाद उनको केपेबल करते हैं कि वो अपने लिए स्केलेबल बिजनेस जनरेट कर सके। जस्ट लाइक अगर मैं इसको समराइज करूँ या नटशेल में बात करूँ, तो इंक्यूबेशन सेंटर वो चीजें हैं जहाँ बच्चे को बताया जाता है कि हाउ टू टेक अ फर्स्ट स्टेप एंड वेयर टू स्टैंड। और जब वो स्टैंड कर जाता है तो एक्सेलरेटर्स के थ्रू से बताया जाता है कि हाउ टू गेट अ जॉब। एक्सेलरेटर्स के पास आते हैं स्केलेबल बिजनेसेस, वो बिजनेसेस जिन बिजनेसेस को आगे ले जाया जा सकता है। तो यहाँ बड़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को भी, अगर स्टूडेंट से बात की जाए, हम भी बात करते हैं जब स्टूडेंट से, तो देयर इज अ कंफ्यूजन कि जी हम इंक्यूबेशन सेंटर जाएं या एक्सेलरेटर जाएं, कौन हमसे इक्विटी चार्ज करेगा, कौन हमसे रेंट चार्ज करेगा, कौन हमें मेंटोरशिप प्रोवाइड करेगा, कौन हमें नेटवर्किंग प्रोवाइड करेगा या फंडिंग प्रोवाइड करेगा। सो यस, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि इंक्यूबेशन सेंटर्स आपको सीड लेवल से लेके आपकी ग्रोथ स्टेज तक आपको जरूर सपोर्ट करते हैं, बट एक्सेलरेटर आर द डोर्स जो आपके फिनिशिंग स्कूल्स हैं, जो आपको 3 to 5 months में चलने से ज्यादा भागना और दौड़ना सिखा देते हैं। Okay. Is it all, Mavish? If you Okay, want to fine, ask something fine, else. fine. Yes, fine. I would like to add in this area because that is the area where I would like to speak on that because ये जो accelerators हैं, ये असल में ये belongs to as per my understanding they belongs to the industry. You can find Not this accelerator. exactly, हाफिज सर, आई थिंक Okay. नॉट एग्जैक्टली। हम इंक्यूबेशन सेंटर को भी देखें, एक एचईसी की पॉलिसी, मुझसे एग्री भी करेंगे रिजवान साहब वगैरह, कि एचईसी की एक पॉलिसी ये भी है कि जब आपकी इंक्यूबेशन सेंटर से इंक्यूबेटी जो है वो ग्रेजुएट कर जाता है, तब भी आप उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ताकि अगर आप उसको किसी किस्म की असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें, आप उसे मार्केट में किसी जी किस्म की जी 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 फंडिंग प्रोवाइड कर जी जी सकें, जी तो जी आप उसके साथ हैं। तो वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर भी तो एक्सेलरेटर में चेंज हो गया, बिल्कुल तो नहीं। नॉट नेसेसरी। आपकी आई एग्री एग्री बिल्कुल आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मैं असल में आपकी बात सही है कि आप कह रही हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर भी कैन बी एक्टिंग एज अ एक्सीलरेटर लेटर स्टेज के ऊपर, देखें। बट मैं आई वुड लाइक टू कोट ओवर हियर इन दिस वेबिनार कि एक्सीलरेटर्स जो हैं असल में वो एरियाज होते हैं जो कि दैट नीड्स टू बी फोस्टरिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस एज वेल। वो वाला एरिया जो कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त अभी ग्रो नहीं कर रहा है, या आप समझ लें कि उसके अंदर जो है वो स्टिल या कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज हैं, so that industries is should also making any contribution in that area as well. They can also, because अगर कोई एक sick यूनिट है या कोई ऐसा यूनिट है जो कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विच इज नॉट ग्रोइंग, या हाफ वे डन हुआ हुआ, हाफ वे हुआ हुआ, और वो इट इज नॉट बीन प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू, so that लेकिन can be यहाँ पे जी 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 यस, इट कुड बी हम जैसे I2I की बात करें, अगर इन्वेस्ट टू इनोवेट की बात करते हैं, तो जी वहाँ जी पे बहुत सारे ऐसे एसएमईज से रिलेटेड जी जी प्रोजेक्ट्स जी हैं दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। जिनको मैं जो असल वो में यहाँ पे एक्सेलरेट जी जी मैं विश यही किया असल में जाता है। मेरा मेजर कंसर्न जो था वो यही था थोड़ा सा हमें, बिकॉज जो यूनिवर्सिटी होती है कैनॉट वर्क इन आइसोलेशन, दे हैव टू वर्क विद द इंडस्ट्री एज वेल। सो इंडस्ट्री का जब कोलैबोरेशन होता है यूनिवर्सिटी के साथ, सो जैसे अगर हम इंक्यूबेशन सेंटर के ऊपर ही हम काम करें, अपने बच्चों को ही हम अपने ट्रेन करें, सो वी कैन ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी
कि we can work upon this thing, and we can also definitely, जो हमारा जो incubation center है at university level पे, that can be work as an accelerator. We can get the any project, paid project from the industry as well, and that absolutely correct. We can convert our incubation center to an accelerator. Agree? I hope that आई एग्री बट okay. जैसे आप कहते हैं इंडस्ट्री लिंकेजेस की बात करें तो ऑब्वियसली जी इंक्यूबेशन सेंटर में भी हम लिंकेजेस के थ्रू मेंटोरिंग एंड जी जी, फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. right right ठीक है, right. ये जो आपने बात करी ना इसमें दो एरियाज आ जाते हैं. हम जी प्राइवेट एक्सेलरेटर्स की बात भी कर सकते हैं और जी हम जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी जी ओन बिल्कुल, जी जी इंक्यूबेशन बिल्कुल, सेंटर जो एक्सेलरेटर में कन्वर्ट होते हैं उनकी बात जी भी कर जी सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. राइट. डॉक्टर अकील, आप काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं, मैंने सोचा कि आपको भी ज़रा बिजी किया जाए, और आपकी जो कीमती राय है कि आप थोड़ा सा ज़रा मोटिवेट कैसे करेंगे हम स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा बताइए. कोई आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है कि हम इन बच्चों को वी कैन ब्रिंग इट इनटू दी इन दिस माइंड फ्रेम में हम लेके देखे कि ये जो है ये दे शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सम न्यू आइडियाज, बिजनेस आइडियाज के ऊपर कुछ सोचेंगे. थोड़ा सा आप, बिकॉज यू बिलोंग, आपका काफ़ी अच्छी एसोसिएशन रही है नस्ट में, नस्ट इज हैविंग अ वेरी good reputation in as far as the incubation center is concerned, and since you have a आपकी थोड़ी सी एफिलिएशन रही है, तो आप हमें बताइए क्या हम ऐसी चीज़ करें कि हम अपने स्टूडेंट्स को हम उनका माइंडसेट, वी कैन चेंज द माइंडसेट of our students, and they can come up in the entrepreneurial side as well. जी डॉक्टर साहब. Sir, before I actually head off to answer your question specifically, a few pointers which I collected over the discussions. I agree with most of it. A few disagreements, या मैं कहीं पे कुछ elaborate करना चाहूँ तो I would like to take some time to highlight that area. Ideas के बारे में we were discussing that students have to come up with ideas. Unfortunately, I disagree with that. Idea तो like the ideas are a dime a dozen. I've been a judge in dozens of idea competitions. और होता यही है कि the students when they come over, they win a competition, they get some prize money of 100,000 rupees, and the same idea is being presented 6 months later in another competition, and the same idea is being presented 6 months later in another competition. I agree. And they're just collecting the prize money, and उसके बाद वो होता क्या है कि like they, for example, 1 लाख रुपया मिला है तो 4 ग्रुप मेंबर्स है तो सबको 25-25 हजार बट गया, और 25-25 हजार का सबने मोबाइल फोन खरीद लिया. उनके अंदर वो एक आतिश ही नहीं है कि वो आगे उसको लेके चले. तो हमें वो आतिश पैदा करना है, यानी वो सिर्फ आइडिया कंपटीशन बनाए आइडिया कंपटीशन. दिस इज द रीजन व्हाई आई एक्चुअली started disliking the concept of business idea competitions, because that is not producing much as it should and it can. uh, Another word which is far more important than ideas is execution. मेरे पास 25 आइडियाज होंगे, आप लोगों में से भी कई लोगों ने और स्टूडेंट्स ने भी कई सोचा होगा कि यार अगर ये इस तरह काम हो जाए तो दिस वुड बी परफेक्ट, अगर इस तरह की कोई चीज बन जाए तो दिस इज गोइंग टू सॉल्व सो मेनी इश्यूज. बट दैट आइडिया स्टेज एज एन आइडिया. As long as you do not execute it, that is worthless. So ideas se badh ke execution. Do you have the capacity to execute it? If you do not, stop wasting your time. Not everyone is supposed to be an entrepreneur. Not everyone can be an entrepreneur. Majority लोग जो हैं वो employees ही होते हैं, क्योंकि employee mindset भी है और no one is willing to take that much risk either. Number one. Number two, we were talking about finances. Dr. Aram highlighted a number of areas which perfectly encapsulated all the entirety of financing. One thing which personally I love, it's a concept called 3 F's of finance. There are 3 sources where you can get financing: friends, family, and fools. Fools सबसे अच्छा होता है वैसे. Friends से अगर आप पकड़ सकते हैं, and the most important thing is if you cannot convince your family and your friends, then probably you do not have the selling power. Maybe And doctor, maybe fool will also not give you any lift to you, because if you are not convincing your family or friend, so maybe fool will also not give you a lift to you as तो फिर वो फूल नहीं हुआ ना. So वो अच्छा फूल ढूंढना भी बहुत जरूरी होता. got it सही है जी, तो please. सर फैमिली और फ्रेंड्स की जब हम बात करते हैं तो लाइक हमारी हालत बुरी होती है when we have to go and talk to our father and convince him about something. So if we are afraid of that one step of communication, then we do not have it in ourselves to be an entrepreneur. If we do not have it in ourselves to go and talk to friends about an idea and extract money from them, why would a stranger be interested in you? So
make sure that if you look at Jack Ma's early pitch to his friends back in early 2000s or late 90s, uh, his passion is evident. That video is available. Anyone can Google it and find it out. His passion is evident in that pitch. And he was pitching to, I think, 14 odd friends, and not everyone invested in Alibaba at that time. But the ones who did, they're billionaires now, and he ended up having a very small chunk of it. So it's extremely important that you should be convincing enough, and you should have belief and faith in your idea first, and then move towards your friends, family, obviously fools, and then move towards these other areas of angel investors or venture capitalists. So these are a few things. रही बात मोटिवेशन की, तो हफीज साहब, इफ बात फिर ये आती है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है तो you have to go out. Everyone is running, and the one who actually is running in the opposite direction, we call them crazy. बहुत से इसके ऊपर quotations मौजूद हैं, like here is to the crazy ones, and those are the ones who actually make a difference. Those are the ones who actually make a change. So you may call me a motivational speaker or a demotivational speaker. I'm not worried about the labels, but the fact of the matter is, not everyone is cut out to be an entrepreneur, and the ones who are, you will find them. हमारी as teachers, as educators, as mentors, as trainers, सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, that is to inculcate that spirit in everyone, ताकि they have an outlet when they come up with an idea. Right. Right. From an education perspective, we should start it from day one. We highlight the employability figures. We never highlight the entrepreneurial figures. तमाम universities के अंदर ये मसला है. So we do not own our entrepreneurs either. So we need to take that ownership. We need to be sure that from the first semester onwards, we tell them that, for example, your final year project, that can be an entrepreneurial project. And if it is an entrepreneurial project, you give them mentorship throughout the 4 years. Why are they wasting 4 years? That is an excellent time when they've got the finance teachers over there, the marketing teachers over there, the management, the HR. If they need a technical assistance, so the other school is right across the road. And you have all access to all of this knowledge, which is being wasted. Right. So the students need to understand from day one, at the age of 17, 18, where they're headed. In my opinion, even that is a bit late. 12, 13, 14, तो वो parenting के अंदर आ जाता है. So if you are grooming entrepreneurs as a parent, how you're supposed to do that, तो वो aspects भी बीच में आ जाते हैं. So again, the ones who can actually do, but us as teachers, it becomes our job to inculcate that spirit starting from day one. Right. That means teachers playing a very important role in setting a mindset of the students to become an entrepreneur, as you said. Definitely. Right. Definitely. Right. Okay. Rizwan साहब, थोड़ा सा बताएं कि if I want to find the effectiveness of the incubation center, do we have any yardstick, or do we have any kind of a dashboard so that we can identify the effectiveness of the incubation center? जी रिजवान साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल इसमें है, इफेक्टिवनेस भी है इसके अंदर. यूनिवर्स, द फर्स्ट थिंग, द एवेंचर कैपिटलिस्ट. तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कितने हमारे फंडेड इस वक्त मौजूद हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स की. रही बात बेंचमार्क की, उसके अंदर हमारे पास इस वक्त कराची में भी, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो कि एक अहम रोल अदा कर रहे हैं. जैसे यूनिवर्सिटी जो स्टार्टअप्स कह लें या उनके एलुमनाइज कह लें या करंट स्टूडेंट्स के ऊपर मेहनत कर रहे हैं. रही बात हमारा इंक्यूबेशन फॉर ऑल एवरीवन, इवन इस वक्त हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग देते हैं, वर्चुअल इंक्यूबेशन भी ऑफर करते हैं और फिजिकल इंक्यूबेशन भी देते हैं. तो पूरे पाकिस्तान से हमारे की बात करूं, इन केस इन कराची में, यस, दे आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी. जैसे अगर मैं बात करूं डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब, वो भी एक बेसिकली एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं ट्रेनिंग्स और जो समझ लीजिए कोवर्किंग स्पेस के अंदर, जिसके अंदर वो एक
लोगों को लेकर आते हैं, और वहाँ ऐसे ऐसे बच्चे भी आते हैं जो मैंने देखे हैं, ये जो मैट्रिक इंटर पास होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस। ठीक, तो वो भी आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है ना। तो वहाँ के ऊपर भी आप देखेंगे, आपको आइडिया बेस भी मिलेंगे, एक्सीलरेटर बेस भी मिलेंगे, स्केल अप होने वाले भी मिलेंगे, और वो लोग भी उनको अपॉर्चुनिटी कि आप आए। इसी तरह से बहुत सारे इसके अंदर, जिसमें इंस्टीट्यूट का जुड़ीमी, ये सारे इसी के बनाए हुए स्टार्टअप हैं जो आज पूरी दुनिया में इस काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ फिर आपके लिए बहुत सारी आ रही हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो I2I नाम ले रहे थे, इन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आज ही से इनकी 5 डेज की एक ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर इन्होंने इन्वेस्टर रेडीनेस प्रोग्राम बनाया है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि 24 को उसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हुई थी और आज से ये स्टार्ट है। ठीक है, अब उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे हैं, जैसे शेल लाइफ वायर है जो कि 21 कंट्रीज में चलता है वो प्रोग्राम। सेम प्रोग्राम पाकिस्तान में भी चल रहा है, अपने प्रोग्राम्स देते हैं कि जिसके अंदर वो कहते हैं आप आए, ट्रेनिंग का हिस्सा बने। फाउंडर इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग आपके पास मौजूद है, और इसके अलावा बहुत सारे। तो मैं तो जो बात कर रहा हूँ इस पर कंपैरेटिव एज की, हर जिस तरह से प्रोडक्ट का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको हम यूएसपी कहते हैं, इसी तरह से यूएसपी यूनिक सेलिंग जो पॉइंट है, मैं अगर अपनी बात करूँ इंक्यूबेशन सेंटर बैरियर यूनिवर्सिटी कराची कैंपस की, वो है माइंडसेट डेवलपमेंट का, और उन बच्चों का अप्लाई करो। अभी हमने आईएसएल कराया था, इंटरनेशनल स्टार्टअप लीग, पूरे पाकिस्तान से उसमें लोग आए थे, 1400 लोग, 250 अप्रोक्स स्टार्टअप्स ने उसमें पार्टिसिपेशन की थी। 7 दिन का बूट कैंप था, 17 इंटरनेशनल नेशनल ट्रेनर्स, जजेस, मेंटोर्स हमने उसमें बुलाए थे, ट्रेनिंग दी, और हमारा एनीथिंग बट योर हैंड्स देन यू कैन। ओके, राइट। हमारे पास सुबह सिंध से, केपीके से और सरहद से, इवन हमारे पास मतलब पूरे ऑल ओवर। और अभी भी इंक्यूबेशन में जो वर्चुअल चल रहे हैं, मकसद यहाँ कोई ब्रांडिंग नहीं है, सिर्फ बताने का आपको ये मकसद है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग इस वक्त इंक्यूबेट हुए हैं। मीन्स कि यूएसबी होती है, तो हमारी यूएसबी यही है। अगर आपने ट्रेनिंग्स देखनी है, कोवर्किंग स्पेस, तो वो फिर एक आईबीए के पास है, जो इस पर वो माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं इस पर। एनआईसी के पास जो है, जिसमें बड़े बड़े नाम, उनके पास जो है बाइकें इंक्यूबेट हुआ था, जो पाकिस्तान की सबसे पहली 3.2 मिलियन की फंडिंग वहीं से रेज हुई थी। ठीक, तो मुख्तलिफ आपके जो स्टार्टअप्स है, इंक्यूबेशन सेंटर्स, उनकी अपनी एक यूएसबी है। ठीक, इसी तरह अगर आप उसी हिस्से में जाए तो 4 इंक्यूबेशन सेंटर्स आसपास हैं, एनआईसी एनएडी में, जबकि एनएडी का अपना अलग सेंटर है। उसी के बराबर में आप चले जाएं कराची यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी का अपना इंक्यूबेशन सेंटर अलग है। उसी से थोड़ा सा आगे चले जाए, कराची यूनिवर्सिटी में ही आईसीसीबीएस, जो कि डॉक्टर अताउर रहमान का इनिशिएटिव है, वो एक वही इंक्यूबेशन है। वहीं से थोड़ा सा आप पीछे की तरफ वापस आए मस्कर, तो वहाँ पे आपको आईबी नजर आएगा। ठीक, इसी तरह से हर जगह का एक अपना एक यूएसबी है, वो लोग उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे मैडम जहां जबरदस्त नेस्ट आयो, क्योंकि जो हमारे कुछ स्टार्टअप्स पास आउट है, वंडर ट्री सबको पता होगा, वो माशाल्लाह उन्हीं की फंडिंग से 3-4 दफा बाहर गए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस आइडिया कंपटीशन, उन्होंने उसमें 3rd पोजीशन लेके विन किया। अराउंड द वर्ल्ड आर्कटिका गए, जो कि ताइवान में होता है, वहाँ विन किया। फिर इस वक्त अभी इस पैंडेमिक में उन्होंने 2 बड़े बड़े गूगल एक्सेलरेटर प्रोग्राम पूरे एशिया पैसिफिक से, दे आर द ओनली वन इज सेलेक्टेड इन दैट एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ठीक, उसके अलावा यूनिसेफ का जो ग्रैंड चैलेंज है, वो उन्होंने माशाल्लाह विन किया। तो कहने का मकसद ये है कि नेस्ट आयो अपने तौर पे मेहनत कर रहा है, लोगों को लेके जाता है, फंड करता है, जो आते हैं कंपटीशन में उनको भिजवाते हैं। तो इसी तरह से हर एस्पेक्ट से, पीआईटीबी की बात करूं, इनका अपना एक एस्पेक्ट है। जैसे अभी उन्होंने अपने आपको रिवाइव किया है माशाल्लाह, हमारा जो इस वक्त अभी वहाँ पे ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए, जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। 13 सिटीज़ के अंदर, इवन इंटीरियर के अंदर भी अपने ये सेंटर्स खोलेंगे, कराची में भी खोलेंगे। तो मकसद ये है कि जितने इस वक्त नाम ले चुका हूँ, जो नहीं भी ले चुका, वो सब काम ओके, ओके, आई गॉट इट। रिजवान, आपका आई गेस थोड़ा सा इंटरनेट इंटीरियर सेल की बात करूं, जैसे अभी हमारे सर बात कंप्लीट कर रहा हूं, जी तो जी शाह अब्दुल लतीफ बिठाई यूनिवर्सिटी से लोग आए, उन्होंने बताया कि हमने अपना इंक्यूबेशन सेंटर बना लिया है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आईबीएस अखबार
एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर वहाँ पे चला रहा है, लेकिन कहने का मकसद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एवरी यूनिवर्सिटी इज मेकिंग देयर एफर्ट्स, ठीक है, अपने अपने लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं और हर किसी की अपनी यूएसबी है उसके हवाले से। थैंक यू। आई गॉट इट। मैं आपका जो आपका जो कहना है मकसद वो ये कि एवरी इंक्यूबेशन सेंटर मस्ट हैव देयर ओन यूनिक सेलिंग पॉइंट। On that basis they are considered to be as an effectiveness, उनकी शो जो होगी वो on the basis of their unique selling point होगी। तो राइट, ठीक है, ओके। मैजबीन, आप थोड़ा सा बताएंगी कि since we have got a lot of focus on the technology side, as I've told you earlier that technologies के हवाले से भी जो incubation centers हैं, they are making contribution। तो और today's world is all about technology। so आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? इस हमने वैसे भी हैव ऑलरेडी डिस्कस, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सेलरेटर्स एंड द incubation centers, and especially when we talking about technology based incubation center, how would you define this, their workings and their थोड़ा सा आप हमें बताएं, एक्सप्लेन करें क्या है। अच्छा देखिए, नॉर्मली जब हम बात करते हैं इनोवेशन की, या नॉर्मली जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो हमारे यहाँ 50% लोग प्रोटोटाइप्स की बात नहीं करते। हम जैसे अभी बात हो रही थी कि आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाए, आइडिया को इनिशिएट किया जाए, आइडियाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या वो सारे आइडियाज एप्रोप्रिएट हैं? क्या वो सारे आइडियाज जो हैं वो स्केलेबल हैं? क्या वो सारे आइडियाज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी है? क्योंकि बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी एज द वर्ल्ड इज चेंजिंग, एंड वर्ल्ड इज changing very rapidly, so in a faster pace it is very necessary to comprehend with the technology. And these technology business incubation centers are working in Pakistan, and they are working on the technology or tech based innovations or tech based startups or ventures. प्लान 9 की हम बात करते हैं, प्लान 9 हमारे पास टेक बेस्ड है। अगर मैं जैसे अभी जहान आरा की बात हो रही थी, नेस्ट आयो की बात करते हैं, तो नेस्ट आयो के अंदर भी फिनटेक पे और टेक्नोलॉजी बेस्ड, इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है, कनेक्ट हेयर इज एन वेंचर और स्टार्टअप। कनेक्ट हेयर की अगर हम बात करें तो कनेक्ट हेयर जो है वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो प्रोटोटाइप लेकर आ रहा है, या इनोवेशन लेके आ रहा है। थिंग इज कि हमारे पास आइडियाज बहुत हैं, हमारे पास चीजें बहुत हैं, हमारे पास यूटिलाइजेशन नहीं है। हमारे पास यूटिलाइजेशन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर्स में ही टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेशंस भी हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस भी हो रही हैं। वी हैव अ टेक्नोलॉजी पार्क, जैसे हमारे पास नस्ट का अपना टेक्नोलॉजी पार्क है इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट। हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी ने अभी टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो अपना इनॉग्रेट किया है। तो ये टेक्नोलॉजी पार्क क्यों है? बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, वी हैव टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे पास सिमसिम फिंजा है। हमारे पास अगर आप कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाएंगे, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें, तो ऑब्वियसली वहाँ कॉर्पोरेट का भी बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे एसएमईज या ऐसे सेक्टर्स जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंट्राप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, वो भी इनके साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है और इनके साथ एसोसिएटेड है। पाकिस्तान इज अ कंट्री जहाँ रिसोर्सेज बहुत हैं, जहाँ अवेलेबिलिटीज भी बहुत हैं, यूटिलाइजेशन नहीं है। यूटिलाइजेशन क्यों नहीं है? अवेयरनेस नहीं है। क्या हमारे पास बिग डेटा पे, या अभी आईबीए ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था बिग डेटा पे, क्या बिग डेटा सिमुलेशंस नहीं हो रही है हमारे पास? क्या हमारे पास ऐसी ऐप डेवलप नहीं? पानामार्ट, हमारे पास एएलएफ एक्सप्रेस, हमारे पास ये वो इनोवेशन है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हमारे पास टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्क्स भी हैं। टेक्नोलॉजी पार्क का तो पर्पस ही यही है कि वहाँ पे जो है जितने भी आइडियाज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी उन्हें फॉस्टर किया जाए, उन्हें एग्जीक्यूट करवाया जाए। बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने पहले कहा था कि 6 यूनिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। किसी भी कंट्री की बैकबोन जो होती है उसकी एसएमईज होती है। हमारे पास भी एसएमईज हैं, हमारे पास समीजा भी इस बारे में बहुत काम कर रहा है। नीड इज कि हमारे पास अवेयरनेस हो कि हमारे टेक्नोलॉजी पार्क में उन एसएमईज को फैसिलिटेट किया जा रहा है, वहाँ इनोवेशन भी कराई जा रही है, वहाँ मेंटोरशिप भी कराई जा रही है, वहाँ नेटवर्किंग भी कराई जा रही है, वहाँ पर कोलैबोरेशन भी कराई जा रही है। अब ये काम कैसे करते हैं? यस, टेक्नोलॉजी बेस्ड। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इंक्यूबेशन सेंटर एक्सीलरेटर से पहले का एक स्टेप है, बिल्कुल इसी तरह टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो टेक्नोलॉजी पार्क से पहले का एक फेज है। जब हमारे पास ऐसे स्टार्टअप्स होंगे, जब हमारे पास ऐसे आइडियाज होंगे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। हमारे पास बायोनिक है नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में, और अब बायोनिक जो है वो माशाल्लाह दे आर प्रॉस्परिंग, दे आर रीचिंग हाइट्स।
हमारे पास इस तरह के और बहुत सारे फाइनेंशियल बेस एंड एप्लीकेशन बेस्ड स्टार्टअप्स हैं जो पहले जो टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स में थे और वो टेक्नोलॉजी पार्क्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वहां जा रहे हैं और अपने आप को स्केल अप कर रहे हैं। सो वी हैव जी। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, आप बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन आपने कर रही हैं, आप करें, कंटिन्यू रखें प्लीज, बताइए। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इनके रेवेन्यू मॉडल्स क्या होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे टेक्नोलॉजी सॉरी इंक्यूबेशन सेंटर का रेवेन्यू मॉडल होता है, बिल्कुल इसी तरह से टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर का भी रेवेन्यू मॉडल है। पाकिस्तान में वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यूएसए की तो बिल्कुल बात करती हूँ, जहाँ पर मैंने आपसे कहा कि आपके पास नेशनल बिजनेस इंक्यूबेशन एसोसिएशन भी है। वहां पर तो शायद एक कॉन्सेप्ट है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो सेपरेटली काम करें, लेकिन हमारे पास अभी ये सिर्फ इन्फेंसी स्टेज पे है। ओके, हमारे पास टेक्नोलॉजी पार्क्स भी इतने ज्यादा नहीं है। राइट, राइट, राइट। थैंक यू मैजवी। मैं डॉक्टर इरम से बस लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आपने, यू हैव वेरी राइटली सेड एंड वेरी briefly explained that how entrepreneurs can generate funds and can manage their funds. Can you please give the incubators centers a kind of tip that how they should manage their funds? Ji, Dr. Iram. Yes, actually, yes. That's why we have theories, different kind of a theories on the capital structure. ठीक है, हमारे पास ये कहा गया है कि किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वहीं से मैं स्टार्ट लूंगी जहाँ पे आपने बात की थी 60-40 रेशो की। तो of course now they have to handle their finance by vesting, means वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब सेव करना चाहिए। अब सेव कैसे करेंगे? यू मस्ट हैव जो हमारे पास परफेक्ट रेशो कहा जाता है 60-40 का। So 60% should be your equity and the 40% should be your debt financing. उससे होगा क्या? Equity is your own money. You don't need to pay the interest or any obligations you have to pay to the intermediaries or banks. तो बेहतर ये होता है कि उसको ज्यादा अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास एक और चीज है, अगर इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग, उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा ना अगर ज्यादा जनरेट करें, ज्यादा ले रहे हैं डेट फाइनेंसिंग, तो उसमें एक फैक्टर आ जाता है टैक्सेस का, क्योंकि एज यू नो दैट इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल जो एक्सपेंस। जितना ज्यादा आप डेट फाइनेंसिंग करते हैं तो उससे आपका टैक्स रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे आप अपने फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका होता है जिससे आप फंड्स को जनरेट भी कर सकते हैं, दैट इज द प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स। ठीक है, जो प्रेफरेंस आप प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स सेल आउट करते हैं और वहां से भी फंड्स जनरेट कर सकते हैं। अब ये करने का रीजन क्या है, क्यों करना चाहते हैं आप, ये क्यों करते हैं? क्योंकि आप डेट फाइनेंसिंग को थोड़ा रिड्यूस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से फंड्स आपके पास हो जहां से आपके पास ऑब्लिगेशंस कम हो। ऑफ कोर्स प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को भी आपको रिटर्न देना होता है, लेकिन वो रिटर्न कहलाता है डिविडेंड्स। ठीक है, डिविडेंड्स को मैनेज करना आपके लिए ज्यादा इजी होता है रेदर देन द इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट आपके पास ऑब्लिगेशंस होती है, आपको हर मंथ हर साल उसको पे करना होता है। जबकि प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड है आप डेफर्ड कर सकते हो। ठीक है, आप बाद में उसको पे कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके पास मैक्सिमम टाइम तक फंड्स रहते हैं और आप डिफरेंट जगहों पे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट इंटरमीडिएरीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और टाइम टू टाइम वहां से पैसा जनरेट कर सकते हैं, फाइनेंस जनरेट कर सकते हो। जैसे जैसे आपके पास फाइनेंस जनरेट होगा, आपके पास जो जैसे कहते हैं कि हाथ में जब फाइनेंस होगा तो देन यू कैन इन्वेस्ट टू अदर प्लेसेस एज वेल। तो थैंक इस यू, तरीके से आपकी सर्कुलेशन फाइनेंस की रहेगी थैंक थ्रू यू, आउट। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब वी आर heading towards the end of the webinar. I hope the audience must have learned about this incubation center, the challenges and opportunities that we have discussed with the speakers and the eminent speakers. They have given a lot of precious time for this seminar, and on behalf of the management, Indus University, I would like to say thanks to Rizwan Sahab from Bahria University, Mahvish Jabeen, Miss Mahvish Jabeen from Casbit, and Miss Dr. Iram Sheikh from Sindh University, and Akil Sahab as an expert in the area of entrepreneurship. Dr. Saab, Dr. Akil, thank you very much. On behalf of the management, I'm again really thankful to all my speakers that they have provided a very precious time from their busy schedules. And I look forward
similar kind of support from your side, inshallah, we'll meet personally as well, and we'll invite you some other in other webinars. Thank you very much. With this, thank you very much, and we'll meet again. Thank you. Assalamu alaikum ji. Thank you. Thank you so much. And Yoga ji, Thank thank you. Allah thank you. Hafiz. Assalamu alaikum ji. Allah Hafiz. Thank you, Iram. It's been a pleasure. Thank you ji. Thank you, sir. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.